Hi guys, so this is a review and an unboxing video of a US Polo Association padded and puffer jacket. I have used it for a few days, so let's see. I've actually posted a short. दिस इज़ द जैकेट. मैंने कुछ ही दिन यूज़ किया है इसको, तो इसके जो टैग्स हैं वो तो निकाल दिए हैं, पर इट्स अ गुड, इट्स अ नाइस जैकेट. एंड लेट्स सी जिप. That's good. तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्फी है, सॉफ्ट है, एंड इट्स अ विंड ब्रेकर. आई मीन इट्स मोर देन ए विंड ब्रेकर. जैकेट है, पैडेड, पफर है. विंड ब्रेकर जो आता है वो थोड़ा क्या आता है, थिन आता है, पतला आता है, तो उसमें इतनी सर्दी रुकती नहीं है. तो ये जो है नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बहुत ही अच्छा जैकेट है. इसमें पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट इधर है, एक पॉकेट इधर है. यू कैन कीप योर फोन और योर वॉलेट, मनी. बोथ साइड्स इट हैज़ a pocket, one pocket, and on the outer side we have pocket here and here. On both sides we have pockets, so basically it has 4 pockets. 2 are on the inside and 2 are on the outside. जैकेट जो है वो है ब्लैक कलर और ऑलिव ग्रीन कलर में है. हाँ, तो आगे से ऐसा दिखता है. दिस इज़ हाउ द यू नो arms look. what do you even call them. और पीछे से पूरा प्योर ब्लैक है. आगे जो है 2 कलर स्कीम है इसकी, ऑलिव ग्रीन एंड देन ब्लैक हियर. कुछ जैकेट्स होते हैं उनमें यहाँ पे जो है वो इलास्टिक काइंड ऑफ थिंग आती है, बट इट्स वेरी गुड. मतलब आपकी रिस्ट में जो है वो लूज़ फील नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी काफ़ी अच्छा फील करता है और बिल्कुल सॉफ्ट है, कॉम्फी है और सर्दी पूरी रोकता है. कोई दिक्कत है नहीं इसमें. ओके, okay, so this is how it is. Nice jacket, very good fit. This is medium size actually, but in other sizes also I am sure कि काफ़ी अच्छा ही product होगा. Okay, thanks guys.